which is about a protagonist who gets married at a very young age and goes into the army, right? So what are the changes that a civilian, एक normal इंसान फेस करेगा जब वो आर्मी सेटअप के अंदर जाता है? होता क्या है उनके साथ? Thank you, and before I start, a big hi to all of you. इस तरफ जितनी भी मुझे girls दिख रही हैं, I think मेरी book की जो protagonist है, that would be all of you, maybe after 5-7 years or a little more. So it's the story of a young girl who's a very bright corporate executive. She chooses to get married to her childhood sweetheart. So lost in love, like we are in the young age. She doesn't think much, just takes a plunge. Her husband is a bright young lieutenant in the army. और बहुत ही romantic ideas के साथ में वो अपना career को टाटा बाय बाय करके she joins him in a small cantonment somewhere in Jharkhand, and thus starts her life of absolute and complete surprise, because it's a very different world. As Dipankar said, we know a lot about the army. We look at an army man and he's a hero already. Uniform में हमने soldier देखा है, officer देखा, हम salute करते हैं. But we rarely think about the women folk and how they support, right? वो हमें पता ही नहीं है. So जैसे आप लोग अभी nod कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है, my protagonist also didn't know anything about the life. And एक glamorous image Bollywood ने बनाया हुआ है फौज का, right? वो glamour के पीछे life कितना tough है और कितना अलग है is what my protagonist Mohana experiences. How does that impact her? उसका खुद का self worth. Because हम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, we have our own aspiration, हम कुछ करना चाहते हैं life में, and then you get married, you go to a small cantonment which is not even a village. So I am looking back at my life, and when I got married into the army, I married an army officer some 27 years back. हम इतनी छोटी जगह पे थे कि वहाँ पे एक grocery जिसको परचून की दुकान बोलते हैं, that was also some 7 kilometers away. So we were in absolute wilderness. So one, there's a lot of isolation. City girls, we are so used to malls, we are used to shopping, we are used to friends, we are used to being connected. So I think सबसे बड़ा जो difference होता है वो है isolation, because you are just a part of a very different world. Where Ranchi used to be like Paris and London. इतना glamorous लगता था कि oh my God, इस महीने हम रांची जा पाएंगे और देख पाएंगे, shops में जा पाएंगे. Apart from that, काफी hierarchy है. आर्मी में आपको पता होंगे, आपने रैंक सुना होगा, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है. So वो आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो रैंक्स बहुत जरूरी है, otherwise the organization won't work. But a young girl can get completely lost in that hierarchy. That what is my role, who am I, and how do I feel good about myself. I've just given up on the life I knew. For the man I love, and that man is nowhere to be seen for 270 out of 365 days. How do I keep happy? How do I keep going? How do I contribute to his career? And how do I stay happy as an individual? I think these are some very big, just to get an existential questions. These are basic questions that I've tried to explore through my book. We'll come back to you, Nandita, on that, more on that. But Kulpreet. And Kulpreet is a man of many arts. He's also an actor, he's also a producer, and he's been in the armed forces earlier. So, before I begin the question, the latest book that he's written is The Battle of Rizalda, that's lying there, please you could show the book. This is also a very interesting book about a lesser known battle, which is fought in fringes of Indian borders, and he's brought out the details of how one particular battalion stood their ground and defended our country against China. Before I go into that, अभी नंदन ने जितना कहा, does it sound familiar to you? आपको क्या लगता है? How does the world look from your perspective, your time in the army? Thank you very much, Dipankar. It's a pleasure to be here in your wonderful city of Nagpur. आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. नंदिता ने जो बोला वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही है.
जब एक लेडी की मैरिज किसी मिलिट्री ऑफिसर से होती है और वो उसके साथ में ट्रांसफर हो जाती है तो बड़ी चैलेंजिंग लाइफ होती है, रोमांटिक भी होती है और साथ में चैलेंजिंग भी होती है। मैं इसको ऐसे बता पाऊंगा क्योंकि मैंने भी आई वोर यूनिफॉर्म फॉर 23 years. I was an officer not in the army but in the navy and I got married 4 years after completion of my service. I had 2 beautiful daughters and I went around performing my duties at high sea all the time while my wife was at home taking care of the family. तो जो सोल्जर का जो काम रहता है वो बड़ा एक कंबाइंड काम रहता है, मतलब it is you have to have a very supportive, a very nurturing, helping kind of a wife, और तभी आप उसको परफॉर्म कर पाते हो। और आर्मी में एक ऐसा डिफेंस फोर्सेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है which sustains this kind of family bond and sacrifice. So जैसा मैडम ने बोला कि आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो हो सकता है 5-6 साल बाद जब मैरिज की बात आएगी तो सोचेंगे कि कोई आर्मी ऑफिसर से शादी हो जाए, लेकिन आजकल जमाना इतना बदल गया है कि लेडी ऑफिसर्स भी हैं डिफेंस फोर्सेस में। तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे मेन सीरियल आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक फौजी ऑफिसर को पटा लो और फिर आप हस्बैंड बन के साथ में रह सकते हो। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग आर्म फोर्सेस की लाइफ है। एनीबॉडी फ्रॉम आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड है? कोई है? नागपुर मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमीज भी हैं कई, जैसे मेरे को बताया गया है। तो बस अभी फिलहाल तो ओपनिंग इतना ही कहूँगा। आप में से कितने लोग इंस्पायर करते हैं to look into the army or look at that side, armed forces, not maybe as a from the soldier, but maybe in the engineering cadres? आप लोग CDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं? Many congratulations, that's wonderful. So what's the next round? Next round is SSC. And when is that? And where is it happening? Allahabad? I've not got the center yet, but I'm going for after 2. That's in March. Wonderful, very good. So आपके पास सच है, lady officer, we have somebody in front of us. That's wonderful. Thank you, congratulations. नंदिता, सवाल ये है कि इन्होंने एक बात कही कि men will get married and go as husbands. Women are expected to go and serve as army wives. Do you think men will be willing to go and serve as army husbands? I think let's hear from some of the men here. How do you even think of that idea? कैसा लगता है आपको army husband बनने वाला idea? जरूरी नहीं कि नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे, but कैसा लगता है कि आर्मी हस्बैंड बन के कैंटोनमेंट में जाकर रहना है? आप लोगों ने कैंटोनमेंट देखा है? शहर वाला नहीं, शहर के बाहर वाला, जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया। दूर कहीं एक आम की बगिया, उसके बाजू में बैकेट बियॉन्ड कुछ नहीं है, उसके 10 किलोमीटर बाद जाके एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, which is a cantonment. Any of you seen something like this? In movies, in books, in videos? In movies only, right? So how does it even feel to get married to someone and go and settle there? Only to realize कि वही जिससे शादी करी थी वही नहीं है, वही अपनी ड्यूटी सर्व कर रहा है, ना तो वही बैठा हुआ या बैठी हुई हो। कैसा लगता है? Anybody? So yes, we'll come to that, but before that, so you mentioned another point. आपने कहा कि the husband was not around for a long time. Emotional connection कैसे बना रहता है अपने partner के साथ? What's your view of that? So I think सबसे ज़्यादा testing या trying aspect of marriage is this: to stay in love, to stay committed, and to stay positively engaged in the relationship, even when you are pretty rudderless, because your partner definitely is anchored. He has a status, whatever is the rank, he has a role. He has been given some responsibilities. वो कभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वो कभी कोई फ्लड या कोई रिलीफ ऑपरेशन है उसके लिए जा रहे हैं, कभी वो कोई सिविलियन, मतलब मैंने देखा था कि कहीं अनरेस्ट है वहाँ पे भी भेज दिए जा रहे हैं. So there are different things that the husband is definitely excited about doing. To sit back and just
take pride and pleasure in the fact that he is doing well. And I don't know what my role is, what my identity is. I think that's a big shift. And my book, 2 Inches Taller. 2 Inches Taller is symbolic of growth. That how someone can be so lost, struggling for identity, struggling for self-worth. Because मैं तो MBA हूँ, मैंने तो एक नौकरी start की थी, I was a management trainee, बहुत कुछ करना चाह रही थी, and suddenly I'm here. And I don't know what is my contribution. So I think that's the biggest shift. But that's not the be all and end all. These are the more challenging aspects of army life. The book also highlights how much camaraderie exists army and why is army so successful. क्योंकि इतने practices हैं जिसमें हिम्मत दी जाती है. You begin to be a part of a unit. You start knowing how you can contribute. And you start taking pride in the fact that I don't wear the uniform directly and I may not be out there doing some big things, but my contribution is no less. And how can I keep getting better at it? And धीरे-धीरे वो sense of new identity कैसे आता है? And how does that help us grow 2 inches taller? That's exactly what my story explores. Kulpreet, you've been a part of Bollywood, and Bollywood has always shown army in a very glamorous way, right? उसमें से कितना ग्लैमर सच है, कितना ग्लैमर स्क्रीन का इफेक्ट है? काफी हद तक तो सच होता ही है क्योंकि कैंटोनमेंट बड़े होते हैं, घर बड़े होते हैं, and the party scene and the camaraderie that Madam mentioned, all that is part of fabric of defense forces, family life. लेकिन फिल्मों में हर चीज को थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देते हैं, उतना ज्यादा ग्लैमरस भी नहीं होता है. But एक बहुत अच्छी चीज होती है आर्म फोर्सेस के एनवायरनमेंट में, which is so beautiful, I can tell you, and that is going to have a direct impact on your children. And that is पैसे की competition नहीं होती. Defense forces में, army cantonment में, all officers more or less get paid equal amount of money. So their status is going to be equal. Everybody is likely to have a similar car, similar equipments or whatever things at home, and children will go to the same school in the cantonment. उससे होता ये है कि because अभी I'm sure if you people think deeply, आप लोग constantly यही सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाई कर लूँ, मेरे को अच्छी कोई जॉब मिल जाए, मैं इंटरनेशनल चली जाऊँ, क्या मैं ये खा कर लूँ, उसने ये कर लिया, इसने कर लिया. Our life is always centered and controlled by material things and money. That is absent in the armed forces. Just think how beautiful that is. तो उससे ये होता है कि आपस में प्यार बढ़ता है, सेंस ऑफ कंपटीशन कम होती है, शेयरिंग ज्यादा होती है. जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपको पता नहीं कितने लोगों को बातें पता है कि मैं किसी आर्म फोर्सेस की फैमिली में नहीं जानता जिनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए. आप आज बॉलीवुड में भी ले लो, आप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस में अगर आप लीडिंग ले लो, I don't know to name them, but you know them. 90% of them are from the armed forces. In business organization, the people who are leading, in corporate world who are leading, some politicians also, they all come from army background. People who have taken birth in a cantonment. That is also a very powerful thing. So इसमें contribution किसका है? Husband तो ज़्यादातर टाइम रहता नहीं है, वो तो ऑपरेशन में चला गया, कोई फ्लड रिलीफ, नेचुरल डिजास्टर, उसमें सब में चला गया. So wives का आपस में association, because there is no sense of competition because of money, that is very very strong. So उससे बच्चे की nurturing बहुत अच्छी होती है. और एक और बात I want to tell you that which I think Madam will also agree, that beyond armed forces also there is a life. So people who work for 10 years, 20 years, they opt out, go to civilian life. Some people might do their complete tenure, superannuate and go wherever. But आपको अचानक कोई आपका सर्विस ऑफिसर दिखाई देता है कहीं पे भी, रिटायरमेंट के बाद भी, तो that bonding is ultimate. And इतना ज़्यादा close relation होता है आपस में कि that helpful attitude is 100% there. From airport when I was coming to this venue, there was a gentleman who came and sat next to me, and within 2 minutes I realized he's a retired group captain and I'm a retired commandant. We had such a beautiful conversation, which is like no pretense. मैं बिल्कुल समझ गया कि इसने 25-30 साल जिंदगी में क्या देखा है, और फिर समझ गया कि मैंने क्या देखा है. So it is so transparent. जब भी मिलेंगे तब मिलेंगे, अच्छा तू दिल्ली में मेरे पास क्या आ जाना है, किस ना. So it is this kind of a selfless, transparent,
familial, friendly environment which nurtures growth, it nurtures bonding, it nurtures a life which is very different and I think very progressive. जो सिविल में मैं देखता हूँ आमतौर पे नहीं होता है. Good point. Good point on that. Coming back to you, Nandita. For the times that you became an army wife, you yourself were very ambitious, and I must say ahead of your times, maybe because you had a corporate job and really everything was sorted for you. But when you look at the girls today, they're far more ambitious. In fact, everybody wants to build their own careers. In this scenario, how would you see them getting married and moving to retirement and leaving their careers? How realistic is it? How feasible is it? If not, what happens then? So, are these people marrying and staying separate lives? What is the scenario? What do you think? So I think different people are taking making different life choices. Some are together, some choose to stay and continue with their jobs. Some try to find more flexible options, so rather than a linear corporate path that most of us want to take, which is not possible. So move करते रहेंगे जहाँ जो मिलेगा. A lot of army ladies get into teaching. I also got into teaching. और in fact it was wonderful. भले ही मैंने वहाँ 4-6 महीने पढ़ाया हो छोटे बच्चों को, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में. Which eventually paved way for me to get into corporate training, and today I work as a corporate trainer and coach, and I think seeds मेरे तब के हैं वो. So I think there are no clear answers, and you need to be pretty comfortable with exploring, life कहाँ ले जाएगी और क्या-क्या हम उसका बना सकते हैं, और वो sense of adventure भी बहुत जरूरी है. So if you're looking for a very finite answer that this is the kind of life I want, then the flux will kill you, because you feel very stifled that I can't see myself reaching there. But if you're just ready to take a plunge, and I think what is really important is a sense of pride that I have a big role to play, and not just to my family or my husband, to the nation I'm saying. And this is a sense of pride that it's my mission to create that sense of pride among army wives. Only then can they feel happy about themselves, and only then can they control this restless box. Otherwise our heads are such restless boxes. All the time we spoke of comparison. अभी तो सोशल मीडिया के कारण वो इंसुलेटेड लाइफ भी नहीं है जिस तरह से आप बता रहे थे कुलप्रीत. So you definitely know who is doing what, who has what means, and it's very difficult to keep this box in a steady space. So I think एक purpose बहुत जरूरी है, and if there is that sense of pride and contribution about how you've chosen to live your life, then you can control it. That's wonderful. In fact, she has something really unique called Chica and Mika. I will tell you to explain that later on, but before that, a contextual question to you and your book. So, you've written this book, Battling of Nizamiya, on a very lesser known but very, very strategic battle. बताइए वो आपको आइडिया कैसे आया? आपने ये किताब क्यों लिखी? And इसके context में, when the battalion was completely isolated in the frontiers of China, what do you think were the families being informed and treated like? उनका क्या reaction रहा होगा? But उनके बारे में पहले if you can just सबको बताएं. So this book, The Battle of Nizamiya, came out 2 years ago. Actually हुआ क्या कि मैं Sure. So this book came out 2 years before. This was a battle which was fought by 120 soldiers in 1962 on the China border in Ladakh area, and their job was to protect the airfield. 1962 में हमारे पास roads नहीं थे लद्दाख में, तो हमको अगर वहाँ जाना पड़ता था तो हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था या म्यूल से जाना पड़ता था, जो खच्चर बोलते हैं ना, म्यूल हिल से उससे जाना पड़ता था. तो हमारे सोल्जर्स को ये पता था कि अगर ये एयरफील्ड चाइना ने कैप्चर कर लिया तो फिर हमारा लद्दाख पूरा गया. तिब्बत को ऑलरेडी हड़प चुके थे, लद्दाख भी चले जाता जो हमारा पार्ट था. तो these 120 जवान्स and one officer, Major शैतान सिंह and 120 जवान्स, इनके पास टास्क था कि आपको चाइना को रोकना है. और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास बंदूकें नहीं थी, because 1947 में इंडिया आजाद हुआ था. इंडिया was a very poor country, as you know, we still very poor,
And but we were poor at that time, so government of India decided not to modernize the weapons. So these people had semi-automatic weapons, सबके पास 600 rounds थे, और पीछे से बताया हुआ था सीनियर ऑफिसर्स ने कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, तुम पीछे आ जाना, मोर डिफेंसिबल पोजीशन को प्रोटेक्ट करेंगे। आर्मी में इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री, ये अलाउड चीज है। लेकिन इन 120 लोगों ने, इनकी फैमिली सब गांव में है, और इन्होंने डिसाइड किया मेजर साहब के साथ कि सर लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, जो मर्जी हो। तो चाइना वाज डेस्परेट टू कैप्चर लद्दाख, तो उन्होंने पहले 1000 बंदे भेजे, फिर 2000 बंदे भेजे, फिर 3000 बंदे भेजे, फाइनली 5000 बंदे तक उनके आए अटैक करने के लिए। 7 waves in the night of 18 November 1962, temperature -24 degrees, और इन जवानों ने लड़ाई की, और इसमें से 110 जवान शहीद हो गए, और इंडिया वॉर हार गया। लेकिन चाइना ने इस बैटल के बाद में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और इंडियन आर्मी को इनके सैक्रिफाइस के बारे में पता भी नहीं चला। दिस इज 18 नवंबर 1962। फरवरी में अब ये जो 2-3 जवान बचकर आए थे, बाकी को तो चाइना कैप्चर करके ले गया, पीओडब्ल्यू, जो बेहोश हो गए थे धुआं के कारण। But 2-3 jawans who came, they were very young, and the senior officer did not believe them. They said we stopped 5,000 Chinese. Senior officers did not believe them. They said you're 9. So nothing happened for 3-4 months, 3 months. In February, just visually सोचो, फरवरी के महीने में लद्दाख एरिया में एक गडरिया, शेपर्ड जिसको बोलते हैं, जो जानवर वगैरह चराता है, वो वहां पे जा रहा था उस एरिया में। क्या जब ज्यादा ठंडी होती है नीचे आ जाता है, तो ऊपर आए कि भी बर्फ पिघली है कि नहीं, मैं जाके देखूं ना देखूं। तो जब उसने जाके देखा कि रिजार्वा पास में 110 जवान मर चुके हैं, लेकिन बंदूक लेके खड़े हैं, क्योंकि वो जम गए थे बर्फ से। इट वाज लाइक -10। तो उसको बड़ा ये, उसने पूरा मंजर देखा, 2 किलोमीटर तक ऐसे हमारे जवान खड़े हैं, भाग के उसने आर्मी को बताया। फिर आर्मी को पता चला, तो ब्रिगेडियर रैना करके जो ब्रिगेड कमांडर थे, 114 ब्रिगेड के अंडर था ये, और ये 13 कुमाऊं बटालियन है, तो 13 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठीकरा। ये सारे रेड क्रॉस को लेकर, मीडिया को लेकर रिजांगला में आए, और इन्होंने फोटोग्राफी की। जब उन्होंने फोटोग्राफी की, तब हिंदुस्तान को पता चला कि हमारे कंपनी ने, चार्ली कंपनी ने क्या लड़ाई लड़ी है। सो चार्ली कंपनी इज द मोस्ट डेकोरेटेड कंपनी ऑफ इंडियन आर्मी। नाउ यहां तक तो कहानी बड़ी अच्छी लग रही है, दिल तोड़ने वाली बात आपको बताता हूं। इस कहानी के बारे में किसी ने कोई न पिक्चर बनाई, न कोई किताब लिखी, न कुछ किया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, द सरप्राइजिंग थिंग इज, 120 जो जवान थे, ये सारे हरियाणा के रहने वाले थे, साउथ हरियाणा के, और मैं भी हरियाणा का रहने वाला। और मेरे फादर एयरफोर्स में थे, और मैं बचपन से सुनता आ रहा था इनकी कहानियां गांव में, कि हमारे जवानों ने ये किया, और हर गांव में एक शहीद की उन्होंने वो मूर्ति बना रखी है, जो बोलते हैं ना, और सारे बच्चे, छोटे बच्चे जाके सैल्यूट करते हैं। मैंने बचपन से देखा है, और मैं जाके चंडीगढ़ में स्कूल में बताता था। जैसे मैं नागपुर में भी तुमको अगर दोनों बैठो रिजांगला बोलता, मैंने सुना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने सुना था। मैंने 23 साल तक अफसर की नौकरी मैंने सब जगह सर्विस की, अफसरों को नहीं पता, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता, और मैंने खुद भी कुछ नहीं किया। मेरी 12 किताब हो गई, उसके बाद बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, एक दिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली, और मेरे को वो रियलाइज हुआ कि वो 1962 में 110 जवान जो हमारे लड़ रहे हैं। तो फिर मेरे अंदर से एक आवाज है कि कुलप्रीत, तू मिलिट्री हिस्टोरियन नहीं है, बट तू क्यों नहीं लिख सकता है किताब? So the call came to me and I wrote this book. And ladies and gentlemen, I must tell you this, and you can see it online also. This has turned out to be my most successful book, and this I feel great satisfaction कि वो शहीद जो गांव के शहीद थे, वो आज देश के शहीद। नहीं तो कि गांव में स्टोरी लोगों को बता दी। लेडीज की बात करें, अब मैं इस पे जब रिसर्च कर रहा था, तो मैं गांव में गया, जो सर्वाइवर्स की वाइफ्स हैं या मार्टियर्स की वाइफ्स हैं। सर्वाइवर्स से तो मैं पर्सनली मिला, कुछ मार्टियर्स की वाइफ से भी मिला, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने इस पे लगाई हैं। और एक चीज तो सब में कॉमन है, वो ये है कि मैंने जब उनसे पूछा कि आर्मी का सपोर्ट, बोला आर्मी का सपोर्ट 100%। 1962 वॉर के मार्टियर के को आज भी उनकी बटालियन से मैसेज जाता है 18 नवंबर, और हर साल 18 नवंबर को रेवाड़ी, जो साउथ हरियाणा में मेन टाउन है, जिसके आसपास के गांव के थे, 18 नवंबर में रिजांगला मेमोरियल है, वहां पे एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन गुड़गांव में होता है, एक रिजांगला में मेमोरियल बनाया हुआ है लद्दाख एरिया में, आप ऑनलाइन देख सकते हैं।
अभी भी उसको रेनोवेट किया है करंट होम मिनिस्टर, करंट डिफेंस मिनिस्टर, इससे पहले वाले डिफेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने जाके उसको रेनोवेट करके इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर। सो आर्मी में the responsibility of the organization and battalion towards the family is lifelong. और मार्टियर्स के बच्चों की स्कॉलरशिप आज तक जो मार्टियर्स हैं उनके बच्चे जो हैं या उनको आर्म फोर्सेस में जॉब मिलने के लिए एक तरह से प्रेफरेंस, ये सारी चीजें हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी शादी आर्म फोर्सेस एनवायरनमेंट में हो रही है और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली को, और एंजॉय भी कर रहे हो। ऐसी बात नहीं, जब पीस टाइम होता है तो पार्टीज भी करते हो, फंक्शन भी करते हो, एंजॉय भी करते हो, लर्न करते हो, ग्रो करते हो, अच्छी फैमिली को नर्चर करते हो जो कल को देश के बहुत बड़े सिटीजन्स बनेंगे। लेकिन वो वहां पे समाप्त नहीं होता है, वो आपकी सर्विस के बाद भी आपके साथ में चलता रहता है। और मैडम ने शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी आइडेंटिटी की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की कितनी वॉर्स हुई आज तक? 4 बार वॉर हुई, चारों बार वो लोग हारे। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि इन देयर कंट्री being a Pakistani is number 2 priority. Number 1 is religion. In Indian army, number 1 is Indian. Number 2 is religion and caste. इंडियन आर्मी में आपकी कास्ट क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका रिलीजन क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप गांव से अफसर बनकर आए हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाटा बिरला फैमिली से अफसर बनकर आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सेम क्वार्टर्स में रहेंगे, सेम अकोमोडेशन में रहेंगे, सेम तरह से रहेंगे। तो उस एनवायरनमेंट में पता नहीं, मैं शायद थोड़ा भावनाओं में बह रहा हूँ, मैं तो पैदा ही चेन्नई में हुआ था, फ्रॉम हरियाणा, because my father was in Air Force, so I did my college from Pune, Neurology, but I college because my father was posted at that time, and my brother ended up joining the Indian Army. I also wore uniform and we went around everywhere, so I'm very emotional about it. But yes, talking about women, I don't think अगर women component को, army wives component को इस पूरी equation से निकाल दें, तो सब कुछ खोखला है, then the whole thing will fall, right? That much is the importance of army wives. नंदिता, इन्होंने जो बात कही आर्मी वाइफ्स का सपोर्ट वगैरह, एक सवाल ये है कि आपने भी अपने टाइम पे जरूर ऐसा कुछ कभी डील किया होगा कि आपको अपने हस्बैंड के जवान्स, यूनिट के जवान्स कोई बैड न्यूज़ सुनाना हुआ हो, या आपने देखा हो ऐसा कुछ, आपको वाकया याद है ऐसा कुछ हो आपके एक्सपीरियंस से, जब ऐसा हुआ हो, आपने देखा हो आसपास कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे स्ट्रेंथ वो जो सब वाइफ्स एक साथ आकर करती हैं, anything like this that you have? So I think it's a very unfair question on me, Dipankar, because you are breaking up memories जिसमें मैं miserably fail हुई थी. I was very 23, 24, not knowing anything about this, and most of the wives of jawans were older, had a better perspective to life, ज़्यादा wise थी वो मुझसे. It's just that my husband was their senior of their husband. वो लोग मुझे actually indulge करते थे rather than me supporting them, because I was a greenhorn. But to answer your question, I did learn a lot from observing the other senior, more tenured women. और ये जो women का एक parallel hierarchy रहता है, unofficial hierarchy, it is because of this sense of support and guidance. So whether it is a couple of ladies who come to you and kind of unofficially, informally induction होता है एक प्रकार से, जिसमें what is right, what is not right बताया जाता है, या if there is a need, a time of need, how people just take you in as a family member and they completely forget the whole caste religion bit that you were talking about. That does not appear, it is not even in the remotest idea on the radar. It is just about ये मेरे यूनिट का ऑफिसर है, इसकी वाइफ है, ये फैमिली को मुझे हेल्प करना है, I can go to any extent. And any extent, simple things like, I told you I was 23, 24, my husband was the same age, we didn't even have a bike back then. My parents were visiting, अब उनको हमें वो रांची, Paris हमारा दिखाना था, कैसे लेके जाएंगे?
we could just walk up to anyone and they would be more than willing कि यार तुम हमारी गाड़ी ले लो, we'll figure out what to do. या हम आपका घर में एक गेस्ट रूम नहीं है, doesn't matter, you all of you come and just stay with us. So for a week we have just gone and stayed with people. Now this kind of bonding and camaraderie, at least I haven't seen anywhere. We do it for select people who are our family or very close friends, but do we do it for anyone just because they work together? ये question का answer very clearly is in a very deep bonding and camaraderie. So before I open the for audience question, one last thing to you. Yes. So A, what is Dipankar? And B, tell us about how does your life inspire the protagonist Mohana in the book, and वो कहानी आपने कैसे सोची और कैसे बनाई? Dipankar ने दो characters introduce किए मेरे book के, they're called Chika and Mika, and Chika and Mika are essentially two voices in the head of my protagonist. So हमारे सबके सर में दो तीन आवाजें होती हैं जो अलग-अलग direction में हमें खींचती हैं. It's just that we don't call them गोलू मोलू or we have not given them any names, but my protagonist has given them names. So Chika is the voice that is the correct voice. जो good girl syndrome होता है कई लोगों को, what is the right thing to do, what is the best thing जो मेरे parents approve करेंगे, जो society approve करेगी, जो मेरा husband approve करेगा, that is the Chika. Or Mika is the voice that is a little more prominent in today's generation, which is about what will serve me. मैं क्या चाहती हूँ? Doesn't matter what is the right thing to do, but what do I want to do and what is in my interest. And the whole thing is a churn because a balanced person is someone who will sometimes listen to Chika, sometimes listen to Mika, and there is no straight path, right? So it's a lot of fun to just understand how the brain works, pulls you in different directions, and these are your value systems essentially. So I've just given it a very light kind of a touch, but you're talking about your basic human values. And the book, कहानी कहाँ से आई, inspire कैसे हुई? So I saw the army for a very short time, for barely 2 years, and that was 25 years back. But I think those experiences were so unique, so different from the way I knew the world or I saw the world afterwards. एक तो ये था कि it shaped me in a lot of ways. हम लोग एक word आजकल काफी सुनते हैं हम corporate world में, especially resilience. In fact, आप मीडिया में भी पढ़ोगे 3 ways to be more resilient, right? So everyone wants to be stronger and more resilient, and it's something that the Forge taught me. How to still, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसके बावजूद आप कैसे strong रहे, positive रहे. So some of these stories stayed with me. I went on to become a corporate trainer. I told you मेरा teaching वहाँ से start हुआ. I started talking to people, and I realized that people wanted to hear more. These were some qualities everyone wants to create. Everyone wants to be more courageous and resilient. And from there, the idea that rather than talking to pockets of people, can I write a book? And rather than saying 3 चीजें ऐसे करो तो ये बन जाओगे, 2 चीजें वैसे नहीं करोगे तो वो बन जाओगे, can I give it a fiction form? Where some of these human qualities can I weave it into a story? तो आप स्टोरी पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा मैं रेजिलियंस की बात कर रही हूँ या करेज की बात कर रही हूँ, पर आपके अंदर वो क्वालिटीज इंप्रूव होंगी. So that's the inspiration and that's the experiment. बहुत बढ़िया. आप लोगों के लिए 2 किताबें हैं यहाँ पे. We've heard Kulpreet and we've heard Nandita. Battle with Allah, which is completely historical and inspirational, and to Interstellar, which will give you your form of inspiration and learning. उठाइए किताबें पढ़िए. You never know what inspires you at what time. And go and find your Chika, whatever you call them now. With that, thank you so much, Nandita and Kulpreet. It was a pleasure discussing with you, talking to you. Any questions? कोई सवाल? जरूरी नहीं है. Dr. can ask me, but yes. Yeah, so in our courses you shift around a lot. So do you think you lose the feeling of home, or like do you lose like familiarity? I think that's the shift, that's the change
that every civilian who gets into the army will go through. Because we are very rooted. हम तो एक शहर छोड़ो एक कॉलोनी में हम लोग roots ले लेते हैं, एक घर में roots ले लेते हैं. So it changes you to be a little more free of these roots. It helps you be more exploratory. that चलो देखते हैं नया शहर है, नए लोग हैं, नया कल्चर है, हर चीज नई रहेगी and there is a sense of fun, excitement and adventure. So उसको positively लेना सिखा देते हैं and you stop missing your roots so much. So I think it's very freeing and liberating at some level. Your thoughts? बिल्कुल ठीक है. मैं बस एक एनेक्डोट बताऊंगा. Whenever I shifted 17 homes in my 23 years of armed forces career. So जब भी हम पैकिंग करते थे, मैं मेरा वाइफ और हमारे असिस्टेंट्स, तो मैं कुछ बॉक्स में डालता था. तो मेरी डॉटर जो है वो उसको निकाल के, वो छोटी थी, वो निकाल के उसको बाहर डालती थी. मैं मुड़ के देखता था कहाँ पे, फिर से वो she used to unpack and used to pack. So but I think बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. और as madam very rightly said, you learn new things, going to new places. शुरू में टेंशन होती है, बट जब नई जगह जाते हो तो बड़ा मजा आता है. Seen so many places. Any other questions? We're hoping some of the questions will come our way. Yes. You will meet female officers and how it feels while they are This is a very interesting question. I also have very. I want to answer this. So when I joined the academy, that time women officers were not there. So हम कभी भी कुछ weakness दिखाते थे अपने मैराथन में या किसी में, तो हमारा इंस्ट्रक्टर जो है हमको गाली देके बस यही बोलता था इंग्लिश में कि don't behave like a sissy. लड़के को जैसे तुम behave करो, सीधे खड़े हो, जवान सीधा हो. अब हम लोग मतलब comparison this so wrong now we know, but that time we didn't know. बाद में women entry भी होगी, अब women officers भी हैं, women cadets भी हैं, men cadets भी हैं. तो 2-3 साल तक बेचारे में इंस्ट्रक्टर्स थे जो डराते थे इन सब डायलॉग से, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे. But now of course it become much more systematic. So what good, women are good. This is a very good step, and the gender bias is completely moved out of it. But मसला बात ये है कि lady officers are coming in in the early 90s, and the officer training academy in Chennai, which started producing the first few batches of women, and they didn't know how to train women officers. So they would apply the same rules and same training content to women, and over time they realized. So I'm a publisher and I'm doing a book with one of the earliest lady officers, and she came up with a very interesting anecdote. She said जब पहला बैच फील्ड पे गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये पता लगा कि there were no women toilets. There were only men toilets. So they had to actually get some form of a structure in place to even accommodate that. When initially there were women coming in, as he rightly said, language was a problem, treatment was a problem, sexism was a problem. But धीरे-धीरे now, army has become so wonderful that they have now embraced officers irrespective of the gender. And we are hoping that more and more women officers will start playing. As a matter of fact, I think now combat roles also have started giving to women officers, and the first commando, I think batch is also come out for women, right? Yeah, so see, there are some practical restrictions, of course, which all of us understand, but within the Western countries are doing a good job of it, I think, and they are good reference point for us to see up to what extent we can do. But I think one good thing about being Indians is that we are committed to the fact, unlike a lot of other countries, that women are equal, and we should do whatever we can to treat them equally. That is, I don't think there's any dispute in India about that. However, practicality of a war situation, terrorism situation, these things are very different. So we cannot suddenly get into that. But gradually things are happening, and I think it's a very positive step. Right.